Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Welcome back, students. So in the previous lecture we were done with some questions. Now we will be back on the chapter portion. Now we were studying about the lightning, its effects, the safety, and the safety outside the house. Now what is the safety inside the house? Okay, so lightning can strike telephone cords, electrical wires and metal pipes. Do you remember lightning is a discharge, electric discharge? Okay, so it's being said that the lightning that can also affect the cords, means the wires, electric wires, the telephone cords and the metal pipes. During a thunderstorm, contact with these should be avoided. That means whenever there is a thunderstorm outside, we should avoid the wire things, whether that will be electric wires or the telephone wires or the metal pipes. Okay, it is safer to use mobile phones and cordless phones. So it is better if we use just the cordless things, that means in which no wires are connected. However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. That means if we are having a cordless phone, अब जिससे हम बात करें, that should also have the same. ऐसा नहीं कि अगले वाले के पास वायर वाला होगा तो हम without that use करें, तो because उनको इफेक्ट होगा. That means if we are in contact, we are talking to that person, तो वो भी it's not acceptable also. Now the bathing should be avoided during thunderstorms to avoid contact with running water. If the water is running, okay, तो वहाँ पर उसका नहाना, bathing वगैरह, that is also should be avoided. Okay, now the electric appliances like computers, TVs, that should be unplugged. The refrigerator connections, the heaters, the geysers, the computers, the TVs, they all should be unplugged. उन सबको unplug करना चाहिए. Electric lights can remain off, they do not cause any harm. Okay, so lights का कोई मसला नहीं है, because कहीं कहीं पे ये भी हो जाता है कि lights भी off कर देते हैं, but that's not the case. Just the wire things, they should be unplugged. Now the lightning conductors, the conductor that allow this lightning. The lightning conductor is a device which is used to protect the buildings from the effect of lightning. Now there are those conductors which we use to protect our buildings from this effect. So a metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. So what we do, we use a metallic rod which is taller than the building, that means the house that we are going to use. Okay, that is installed in the walls of the building during its construction. One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. The rod provides easy route for the transfer. इसको हम बोलते हैं, कभी कोई घर, हम बोलते हैं ना घर को अर्थिंग कर रहे हैं, दिस अर्थिंग इज द सेम. जहाँ पे हम एक रॉड, एक मेटल रॉड लेते हैं दैट इज टॉलर देन आवर बिल्डिंग, उसको हम एक जो उसका एक एंड होता है दैट वी केप्ट इन द एयर, और जो दूसरा है हम उसको ग्राउंड करते हैं, ग्राउंड के साथ बरी करते हैं, सो दैट जब भी कोई ऐसा कुछ हो जाए तो जो भी डिस्चार्जेस है वो सीधा वहाँ पे उसको सबसे वो लो रेजिस्टेंस पाथ मिले और करंट वहाँ से ही जाके सीधा ग्राउंड हो जाए. होता नए घर वगैरह में करते हैं ये अर्थिंग वगैरह. ओके, अब वो क्या, क्योंकि मेटल रॉड होती है ना, अब इसका बात यह है कि हाउ इट विल हेल्प अस. सी दैट इज अ मेटल रॉड, दैट मीन्स उसमें जो कंडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है और उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है. अब करंट वहीं से फ्लो होती है जहाँ से रेजिस्टिविटी जिसकी बहुत कम होगी. रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जिससे हम करंट को रोकते हैं. अब ये मेटल है, दैट मीन्स इसमें रेजिस्टिविटी होगी ही नहीं. दैट मीन्स जो चार्जेस है वो इसी से निकल जाना ज़रूर पसंद करेंगे, बिकॉज इसमें कोई रेजिस्टिविटी है ही नहीं. तो यहाँ से करंट नीचे जाएगी इसी वायर के थ्रू, इसी रॉड के थ्रू, और वह सीधा ग्राउंड हो जाएगी क्योंकि इसका हमने कनेक्शन ग्राउंड से लगाया होगा. तो इसी को बोलते हैं अर्थिंग. नाउ द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर पाइप्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड टू एन एक्सटेंट. वो भी हमें बचाते हैं, बट डू नॉट टच देम. लेकिन हमें कोई थंडरस्टॉर्म हो रहा है, हमें उसको टच नहीं करना है, बिकॉज उसमें तो करंट चल रही होगी ना. अगर उसको टच करेंगे तो हमें करंट लग जाएगी. Okay, now there are earthquakes. You just learn about the thunderstorms and the lightning. These are natural phenomena and can cause large scale destruction of human life and property. Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. इसको हम फिर भी predict कर सकते हैं. The weather department can warn about a thunderstorm. Okay, if a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclone accompanying it. ठीक है, इतना तो पता thunderstorm है, lightning होने वाली है. Okay, सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर. तो हमें टाइम मिल जाता है. थंडरस्टॉर्म हुई, दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है. ठीक है, तो हमें हो कि देयर इज हाउ वन मोर नेचुरल फिनोमेना जहाँ पे अब प्रेडिक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, दैट इज द अर्थक्वेक. वहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं होती, वो बस सडनली हो जाता है. इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ वेरी ह्यूज स्केल. A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri. Okay, एंड टंगडार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, कश्मीर में जो प्लेसेस है वहाँ पे हुआ था 2005 में. बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. तो बस आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे.
तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो अर्थक्वेक्स हैं दे आर टोटली अनप्रिडिक्टेबल. बाकी के जो 2 फिनोमेना हमने पढ़े हम उनको फिर भी कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल एंड इट कैन कॉज अ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी एज वेल. Okay, so I hope that's all for today.